Constructors and Destructors. A constructor is a special initialization function that is called automatically whenever an instance of class is declared. कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के समान ही होता है. कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन मेंबर होता है जिसका इस्तेमाल क्लास वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है. एक कंस्ट्रक्टर को क्लास में पब्लिक में डिक्लेयर किया जाता है, जबकि इसका डेफिनेशन आउटसाइड क्लास या इनसाइड क्लास हो सकती है, जैसे अन्य मेंबर की तरह स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करके. हम सीधे किसी क्लास डेटा मेंबर को इनिशियलाइज नहीं कर सकते क्योंकि क्लास के डेटा मेंबर प्राइवेट स्पेसिफायर में डिक्लेयर रहते हैं जिन्हें आउटसाइड से एक्सेस नहीं किया जा सकता. क्लास एक प्रोग्राम को सिक्योरिटी जैसा फीचर प्रोवाइड करता है जिसके कारण हम क्लास के डेटा मेंबर को सीधे इनिशियलाइज नहीं कर सकते. इसीलिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं. यदि किसी क्लास में कोई वैल्यू असाइन नहीं किया गया है तो कंस्ट्रक्टर स्वयं ही क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर देता है जिसका वैल्यू या मान हम कहें बिल्ट इन टाइप की तरह ज़ीरो या गार्बेज हो सकता है. A constructor is a special type of member function of a class which initialize object of a class. In C++, a constructor has the same name as that of the class and it does not have a return type. Constructor is automatically called when object create. It is used to initialize all class data members. If we don't write a constructor in the class, compiler will provide default constructor in C++ programming. So we can say it has the same name of class. It must be a public member. The constructor has no return value specification, not even void. Constructors are of three types: default constructor, parameterized constructor, and copy constructor. Default constructor is a constructor that either has no parameters or if it has parameters, all the parameters have default values. एक कंस्ट्रक्टर जो कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है. एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में क्लास को विजिबल करता है क्योंकि जैसे ही क्लास ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है यह ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, अगर अलग से किसी फंक्शन मेंबर कॉल नहीं करना पड़ता है. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड व्हेन कंस्ट्रक्टर आर नॉट डिफाइंड फॉर द क्लासेस. Parameterized constructor. A constructor is called parameterized constructor when it accepts a specific number of parameters. If we want to initialize an object with some values while declaring it, we can do it creating parameterized constructors. जैसा कि नाम से पता चलता है जो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर पास करता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का उपयोग समान वैल्यू के लिए किया जाता है, वहीं डिफरेंट वैल्यू इनिशियलाइजेशन के लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया जाता है. Parameterized constructors helps in initializing each instance of the class to different values. Parameterized constructor is helpful for constructor overloading. Whenever there is necessity to initialize the various data elements to different objects with different values, when they are created, then this necessity can be fulfilled by passing arguments to the constructor function when the objects are created, and this argument passing in C++ is possible by using parameterized constructor. Parameterized constructor can exist even without the existence of default constructor. Copy constructor. A copy constructor is a member function that initializes an object using another object of the same class. A copy constructor is a method or member function which initializes an object using another object with the same class. The copy constructor is easier to use when our class contains a complex object with several parameters. Whenever we want to add any field to our class, then we can do just by changing the input to the constructor. Destructor. A destructor is a member function that is invoked automatically when the object goes out
of scope or is explicitly destroyed by a call to delete. A destructor has the same name as the class preceded by a tilde. सी प्लस प्लस डिस्ट्रक्टर का यूज़ कंस्ट्रक्टर द्वारा क्रिएट किए गए ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। जैसे कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्लास वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है, ठीक उसी तरह सी प्लस प्लस डिस्ट्रक्टर का यूज़ कंस्ट्रक्टर के द्वारा इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। Constructors are special class functions which performs initialization of every object. The compiler calls the constructor whenever an object is created. Constructor initialize values to object members after storage is allocated to the object, whereas destructor on the other hand is used to destroy the class object.